Okay, good morning, everyone. Yeah, good morning. This side Dr.G. And today I will be taking up general embryology. So, general embryology will be in two parts. Part one that I will discuss today, and part two that I will discuss tomorrow. So, yes, Piyush, Kapil, Zahir, Sufyan, Satyashri, Ruchi, Narayan, Manisha, Asam, Dr. H, Zeenal, Ashik. Okay, Narayan, Manisha, travel expert. Okay, welcome everyone, guys. Welcome everyone to the beautiful session. Yeah, so I hope the audio and visuals are perfectly fine. So please just give me a thumbs up in the chat box that the audio visuals are perfectly fine. Kesar, Jay, Muskan, Nitin, Harshit. Okay, perfect, guys. So yeah, just give me a thumbs up that everything is like going very perfect. Yeah. Okay, Kesar, Lohita, travel expert, Manisha. Okay. Orandla. Jay. Okay, guys. Perfect, guys. Everything is like going very perfect. Perfect. Nikita, Bush, Bhavesh, Thapar, Gaming, Jinal. Okay. We have 90 students now. Perfect. So now, guys, what's my plan over here on this particular channel? What I am gonna discuss? Yeah, the very first thing that is I will start from the scratch. Scratch means I will start from very basics, guys. Okay, I will start with the general embryology. Okay, I will discuss spermatogenesis, oogenesis, and first week of development, that is fertilization and implantation in this session today. In the upcoming sessions, firstly, a very good news to everyone, those who are live over here, that the session will be like regular. Every day in the morning, 10:30 a.m., I will be taking session up to like 2 hours, 2.5 hours, 3 hours, up to my wish. So, in the upcoming sessions, guys, what my plan is that I will be discussing system-wise, like integrated approach. For example, if I take gastrointestinal system, or if I take cardiovascular system, so what I will discuss in that particular system is first I will discuss the systemic embryology, anatomy, histology, physiology, pathology, pharmacology, means everything about that system at one place. Obviously everyone is aware that next is going to come, right? Next is going to approach, like you all have to give next exam in the upcoming years. So it's better to have an integrated approach towards the system. अब कहते हैं पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी पढ़ ले, बट अब क्या फायदा जब तुम्हें बेसिक फिजियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी नहीं आती है. So for studying surgery also, no, a basic of anatomy is required. So it's better to start, take one register of each system, prepare one copybook or one particular register. Okay, one particular register. So yes, so in that copybook, let's start with the very first topic, that is general embryology. So I hope everyone is ready, guys. So yeah, just give me a thumbs up, guys, everyone. So we can start with the class. Yes, sure. Okay. Perfect. Aman, Narayan, Aditya, Rohit, Osama, Nitin, Kesar. Very good. Very good, guys. So let's start with the embryology, guys. Let's start with the embryology. Hmm. Yes. Now, firstly, what do you understand by the embryology, guys? What do you actually mean by the term embryology? Okay. Okay. Let's start. It is study. It is mandatory for everyone to write the notes along with me. Only then you guys will learn. Okay. If I'm writing along with you, it is very much necessary to write along with me, right? So write down. It is the study, okay, of formation. It is the study of formation, or we can say development, and maturation of embryo. Maturation of embryo.
So in embryology, we actually have to study the formation, how the embryo is formed, how the embryo is getting developed over the weeks, and how does it get matured. So it is actually the combination of formation, development, and maturation of embryo. Okay, and that is particularly which is known as the embryology. It is known as the embryology, right? So let's start with the very first thing, that is gametogenesis. Gametogenesis, you already know, it is formation of gametes. Okay, it is formation of gametes. But before that, remember that where these gametes are actually the primary sex cells are coming from. So you guys have to understand that there is something which is called as the epiblast. Now this epiblast, it is also called as the primitive ectoderm. Okay, this epiblast, it is called as the primitive ectoderm. Okay, this epiblast, it is also called as the primitive ectoderm. Now, you guys are very well aware कि तीन layers के नाम तो तुमने सुने ही होंगे. You must have heard about the three layers, right? Ectoderm, endoderm and mesoderm. तो अभी के लिए अगर आपको ये चीजें नहीं भी पता चल रही, that what is epiblast, what is yolk sac, what is genital ridge, don't worry at all. In the upcoming sessions, like in the upcoming, in a couple of 15-20 minutes, you will be like fine with all the terms. तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. Okay, so remember that there is something which is called as the epiblast. This epiblast will later on form the ectoderm. तो इसको हम primitive ectoderm बोलते हैं. Primitive मतलब जो बनाने वाला ectoderm. Okay, पहले वाला मतलब पहले ectoderm नहीं था, पहले क्या था, epiblast था, right? Now what happens to this epiblast in the second week of embryogenesis? Remember that in the second week of embryogenesis, what will happen? It will form the primordial germ cells. Yes, Alhadita, it is lecture for first year MBBS. Yes, it will form the primordial germ cells. Now, these primordial germ cells, in short form, I will be writing at PGCs. Okay, primordial germ cells. Okay, now these primordial germ cells, okay, these are also called as the primitive sex cells. So these are also called as the primitive sex cells. Okay, now if I ask you a question, that primitive sex cells or primordial germ cells, they are actually formed from. So basically, they are formed from or they are derived from the epiblast, right? Now, remember, guys, this primordial germ cell will migrate to the wall of yolk sac. It will migrate to the wall of the yolk sac. Guys, no need to worry if you are not understanding some terms. So yolk sac क्या है, epiblast क्या है? We'll again discuss it in a couple of minutes. No need to worry about that. So just remember, guys, that it migrate to the work of yolk sac. It is actually by 4 weeks. So it is actually by 4 weeks, right? Later on, at okay. So remember that it migrates to the wall of the yolk sac, right? Later on, remember, by the fifth week, by the fifth week, basically these primordial germ cells, the PGCs, again migrate. These again migrate to genital ridge. And this genital ridge will differentiate. Okay, it will give rise to the sex cells, that is spermatogonium.
और oogoneum. Now guys, अब द क्वेश्चन इज कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो है जिनको हम लोग प्रिमिटिव सेक्स सेल्स बोलते हैं, ओके, द प्राइमोडियल जर्म सेल्स, ओके, और द प्रिमिटिव सेक्स सेल्स, जस्ट yes, primordial germ cells that are also called as the PGCs or the primitive sex cells. Remember guys कि जेनाइटल रिच जो है, अगर हम सेकेंड वीक की बात करें तो सेकेंड वीक में कोई भी जेनाइटल रिच नहीं होता. ओके, देयर इज नो जेनाइटल रिच इन द सेकेंड वीक. वी डोंट हैव एनी मीसोडर्म. आपने एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीसोडर्म पढ़ा हुआ है. ओके, तो मीसोडर्म ही नहीं है तो टेस्टिस और ओवरीज का कोई डेवलपमेंट ही नहीं है सेकेंड वीक में. तो इसलिए these primordial germ cells will migrate to the wall of the yolk sac. It will migrate to the wall of the yolk sac. Okay. Now again in the fifth week तक क्या होता है? थर्ड वीक के बाद there is formation of the genital ridge. तो fifth week, okay, they will again migrate to the genital ridge and will give rise to the primitive sex cells जिनको हम लोग spermatogonium या oogonium बोलते हैं. Okay, which we say spermatogonium और oogonium. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव सेक्स सेल्स जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एपीब्लास्ट, राइट. अगेन दे विल माइग्रेट टू द वॉल ऑफ द योक सैक, क्योंकि सेकेंड वीक तक बेटा कोई भी मेसोडर्म नहीं होता, कोई जेनाइटल रिच नहीं होती. तो ये जो जर्म सेल्स है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दे हैव टू गो टू द जेनाइटल रिच, बट सेकेंड वीक तक तो कुछ है नहीं, तो दे माइग्रेट. तो ये माइग्रेट करते हैं टू द वॉल ऑफ द योक सैक. योक सैक क्या होता है, विल अगेन डिस्कस इट इन अनदर कपल ऑफ मिनट्स. ओके, एंड till the fifth week they again migrate to the genital ridge which is formed by the fifth week. तो अभी पूरा डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो पता चलेगा पहले हफ्ते में क्या हो रहा है, फर्स्ट वीक में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सेकंड वीक में क्या हो रहा है, थर्ड वीक में क्या हो रहा है. So in the genital ridge, it will differentiate into or it will give rise to the primitive sex cells or the primordial germ cell, that is spermatogonium or oogonium. I hope till now it is clear. So if it is clear guys, let's answer these three questions that I have like formed. Okay. So the very first answer. Okay. Now I'm waiting for your answers guys in the chat box. Primordial germ cells. Primordial germ cells migrating into the genital ridge are coming from. Okay, answer guys. Primordial germ cells migrating into the genital ridge are coming from. चलिए आंसर दीजिए फटाफट जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं. यस यस गाइस, परफेक्ट. बेटा इशिता एपीब्लास्ट नहीं होगा. देखो अगर अगेन क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है. जेनाइटल रिच, देखो जेनाइटल रिच वाला जो पॉइंट है, माइग्रेटिंग टू द वॉल ऑफ द योक सैक. अब देखो हाँ योक सैक, बाकी सबने आंसर ठीक दिया है. ओके, द वंस हु हैव लाइक ओके ओके नॉट इन देयर जयशिता या कोई जिन्होंने भी आंसर दिया है, डोंट नीड टू रिमूव द आंसर्स. बेटा अभी क्या है, नहीं आता है, अभी हम सीखेंगे. ठीक है, विल ट्राई टू लर्न हियर ओनली. ओके, तो इट्स बेटर इफ यू गिव रॉन्ग आंसर्स, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा तुरंत. ठीक है, तो बाकी सबने आंसर्स ठीक दिए. जय, अनुष्का, मुस्कान, विष्णु. तो आपको पता होना चाहिए जो जेनाइटल रिच में पीजीसीज आ रहे हैं, primordial germ cells, वो कहां से आ रहे हैं, that are coming from the wall of the yolk sac. They are coming from the wall of the yolk sac. So the first answer it will be the wall of yolk sac. Now again second question, primordial germ cells are derived from. Okay, primordial germ cells are derived from. चल आंसर दीजिए फटाफट. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. यस, कपिल, सत्यश्री, यू ऑल वर राइट. रोहित, राज, टिम्पल, कृष्णा, नारायण. यस, फन मोड. हाँ, प्रिमिटिव एक्टोडर्म बोलेंगे बेटा, एक्टोडर्म आंसर नहीं है इसका. या एपीब्लास्ट, अनुष्का, मुस्कान, जय, डिम्पल, जशिता. यस, वेरी गुड. ओसामा, कपिल, राज, श्रावणी, वेरी गुड गाइस. So the primordial germ cells are basically derived from the epiblast. Okay, they are derived from the epiblast, or I can simply say it is the primitive ectoderm. Okay,
Primordial germ cells will give rise to. Okay, Narayan, everyone is right. So he'll, okay, guys, everyone is right. Primordial germ cells will give rise to. Okay, answer. Primordial germ cells will give rise to. Hmm. Yes, I'm waiting for the answers. Yes. Yes, gametes, Shravani, yes. Spermatogonia, Muskan, very good. Oogonia, very good. मिनी ब्लॉकिंग वो पहले वाला आंसर था, वॉल ऑफ द यॉर्क सैक, कोई बात नहीं, लेट लेट आंसर करोगे तो भी चलेगा, बट आंसर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरी क्लास में टॉपिक डिस्कस करो, उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। सो दे आर गिविंग राइज टू स्पर्मेटोगोनियम एंड वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द oogoneum. Spermatogonium and oogonium. I hope this is done. So guys, this slide is important. So wherever in my lectures I'm using the dollar sign, it clearly indicates that this is the important slide. Okay. So yes, perfect, perfect. चल फिर कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं फटाफट से, क्योंकि आई एम डीलिंग विद द कोर एस्पेक्ट, सो आई वांट एवरी। Now, what is mitosis, guys? Mitosis, in mitosis, what happens? The chromosome number remains same. The chromosome number remains same. ये सबको पता ही है, the chromosome number remains same. अगर 2n है ploidy level, तो it will be again 2n only. 46 chromosomes है, तो mitosis is also known as the equational division. तो subsequent cells में भी कितना जाएगा? It will be 46 only. It will be 46 only. Yes, yes, it will be 46 only. Apart from that, meiosis. Guys, remember in meiosis, the chromosome number is reduced to half. Okay. So yes, okay, let's first bifurcate it, guys. So meiosis is of two types. Okay, meiosis 1 and meiosis 2. Now, can anyone tell me the difference between meiosis 1 and meiosis 2? Yes, can anyone tell me the difference between meiosis 1 and meiosis 2 in the chat box? Yes. So remember, guys, in the meiosis 1, remember the chromosome number. The chromosome number is reduced to half. Yes, everyone is right. Yes, perfect. Everyone is right. The chromosome number is reduced to half. अगर 46 है तो कितने हो जाएंगे? 23. तो meiosis 1, it is also called as the reductional division. Reductional division. एक क्वेश्चन भी आया था एम्स 2007 में, तो वो क्वेश्चन भी अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में. Okay. Yes, that question also will see. Apart from that, if you talk about the meiosis beta, meiosis 2, meiosis 2, remember that the chromosome number remains same. It is somewhat like mitosis, it is equational division. The chromosome number remains same. Okay, the chromosome number remains same. Now, apart from that, remember guys, you already know the phases of the cell cycle. कौन-कौन से phases होते हैं? You already know we have prophase. Okay, we have metaphase, anaphase and टीलोफेज. अभी ये सारे फेजेस यूज होंगे, मतलब इसमें से एक दो तो यूज होंगे ही होंगे. तो with respect to the general embryology, prophase और metaphase हम लोग अभी will use it in the subsequent lectures. Okay, prophase and metaphase. Yes, हाँ बिल्कुल ठीक है ओसामा, very good guys. So I hope the basics are clear to everyone. Yes, अंजेश good morning, finally नींद खुल गई. चल, तो okay, now we'll start with spermatogenesis. Now we will start with spermatogenesis. Now guys,
यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाती है, अभी तक तो बेसिक पढ़ रहे थे, तो यहाँ से देयर इज समथिंग विच इज लाइक गोना स्टार्ट। यस, आई होप एवरीवन इज राइटिंग द नोट्स अलोंग विद मी। एक थम्स अप दे दो दैट ऑडियो विजुअल्स कुछ सब कुछ फाइन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, so that we start with spermatogenesis now. चल ओसा, perfect. Now, spermatogenesis basically refers to, yes, all fine, all fine. Okay, okay, well, guys, very good, very good. Muskan, Shravani, Prisma, Travel, Rutik, actually comments are like going so fast, but yeah, everything goes well. Okay. Now, in the spermatogenesis, guys, spermatogenesis का मतलब क्या होता है? Sperm का बनना, ठीक है? So basically, it refers to the formation of spermatozoa, formation of spermatozoa, or we can say the mature sperm, okay, the mature sperm from spermatogonium, from spermatogonium. It is formation of spermatozoa or mature sperm from spermatogonium. Spermatogonium क्या था? Spermatogonium तो हमें पहले ही मिल चुका है. That is the primitive sex cells. Okay. Spermatogenesis basically testis के एक part में होती है. Can anyone tell me where does spermatogenesis takes place? Anyone in the chat box? फटाफट से बताओ spermatogenesis की location क्या है? Testis के एक part में होती है. Testis के एक part में there is something which is called as spermatogenesis going on. Tell me fast. यस, फन मोड सेमनीफेरस, हाँ तुमने शॉर्ट फॉर्म में ठीक है, टेस्टिस में ही है, ठीक है, बट टेस्टिस का भी पार्ट बताओ ना बेटा। नहीं बेटा, सेमाइनल वेसिकल्स नहीं है। हाँ, सेमनीफेरस आधा आधा टाइप कर रहा है फन मोड। ओके उसामा, वेरी गुड। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, परफेक्ट आंसर। तनुप्रिया, ऋषि, यस, गुड डे। या आदित्य, डिंपल, ओके, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट 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 गाइस। सो आपको ये पता होना चाहिए कि द स्पर्मेटोजेनेसिस इज बेसिकली, it is, it occurs in testis, और testis के we have two anatomical compartments. अगर टेस्टिस की एनाटॉमी पर जाए तो इसके अंदर दो एनाटॉमिकल कंपार्टमेंट्स होते हैं। कैन एनीवन टेल मी? एक तो आप लोगों ने बता ही दिया है, यस, वन यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी। अब ओके, तो पहला मैं आपको लिख दूं, यस, वी हैव द seminiferous tubule, ओके, seminiferous tubules। अब डायग्राम को अगर अच्छे से देखा जाए बेटा, तो ओके, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। या डायग्राम को अगर अच्छे से देखा जाए तो ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स, इसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल। और इसी के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है बेटा, that is something which is called as the interstitial compartment. Okay, इन्हीं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस आपको दिख रहा है, जो ब्लू कलर से स्पेसेस है बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। तो मैं नीचे लिख देता हूं, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। नाउ इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट basically, okay, this interstitial compartment contains, okay, this interstitial compartment contains Leydig cells, we have
some fibroblast, fibroblast, the cells which are present. And apart from that, remember, we have the neurovascular tissue. न्यूरोवस्कुलर टिश्यू. अब मुझे फटाफट से बताओ न्यूरोवस्कुलर का मतलब क्या है. जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में न्यूरोवस्कुलर का मतलब क्या है. तो यू गाइस शुड बी अवेयर कि टेस्टिस के दो एनाटॉमिकल कंपार्टमेंट्स होते हैं. एक होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड द अदर वन द स्पेस दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन देम इट इज द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट. क्या. Yes, Shavni, it is the nerve and the blood vessels. Yes, it is the nerve plus vessels. Very good. So Leydig cells, fibroblast and neurovascular tissue will be like present over here, right? Apart from that, if we talk about the spermatogenesis, the seminiferous tubule that is taking place in the spermatogenesis, guys, remember that this ऐसे ही याद रखना है बेटा, ऐसे ही याद रखना है. Yes, everyone is right. Everyone is right. तो इसी एस से आप लोगों को याद रखना है दैट वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज द सर्टोली सेल्स. अभी हम लोग ब्लड टेस्टिस बैरियर भी पढ़ेंगे तो उसमें सर्टोली सेल्स का रोल देखेंगे. ठीक है. एंड दिस सर्टोली सेल्स इज ऑल्सो नोन एज सस्टेंटाक्युलर सेल्स. सस्टेंटाक्युलर सेल्स. सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम क्या हो जाता है. इट इज कॉल्ड एज द सस्टेंटाक्युलर सेल्स. It is called as the tentacular cells. Okay. And remember that these Sertoli cells release a very important hormone and that is called as inhibin B. Again, this is one of the important question. तो इसके ऊपर आप लोग लगाएंगे डॉलर का साइन. It releases inhibin B. And what is the function of inhibin B? We will discuss in couple of minutes. तो अभी जब मैं hormonal control of spermatogenesis पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. So it releases inhibin B. तो इस पे एक डॉलर का साइन लगा लेंगे. Okay. And these seminiferous tubules will also contain one more thing, and that is the germ cells in various stages of development. Okay, आपको पता है कि अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता है इट हैज वेरियस stages: primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, and then the spermatozoa are formed. So every stages you will find in the seminiferous tubule. So it contains the germ cells in the various stages of development. Okay. And seminiferous is the tubules is the site for spermatogenesis. इसको भी अलग पेन से आप लोग मार्क कर लेंगे. It is the site for spermatogenesis. Spermatogenesis. इसके ऊपर एक डॉलर का साइन लगा लेना. इसके ऊपर एक डॉलर का साइन लगा लेना. ओके. सो यस. हाँ, ये भी सही है. ओके, ये भी सही है. सर्टोली सेल्स. हाँ. यस अविक. तो यस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ. तो फटाफट से एक थम्स अप दे दो बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में. आई होप एवरीथिंग इज फाइन. तो फटाफट से एक इसका डायग्राम बनाएंगे आप. ठीक है, इसका डायग्राम भी बनाएंगे. ठीक है. चल अविका. वेरी गुड. श्रावणी, इट्स मी. ओके. ओके गाइस, परफेक्ट. चल. इनिबिन बी काम क्या होगा. इनिबिट करने का ही होगा. तो अभी वो हम देखेंगे. या एंजल मैथ्यूस. वेरी गुड. या परफेक्ट परफेक्ट गाइस. चलो फिर डायग्राम बनाना स्टार्ट करें. प्लीज राइट द नोट्स अलोंग विद मी गाइस. राइट, प्लीज राइट द नोट्स अलोंग विद मी. एंड और जो भी डायग्राम बना रहा हूं मैंने पहले भी बोला है लाइक students whom like I'm teaching. So yes, it's mandatory to use color pens, right, for the diagrams. तो diagrams थोड़े से अच्छे लगेंगे देखने में तो याद करने में भी इजी होगा. कलर कोडिंग. ठीक है. हेडिंग डाल दीजिए. एट प्यूबर्टी. नाउ व्हाट इज हैपनिंग एट प्यूबर्टी.
Sure. Let's start. Yeah. So remember, at puberty, what is happening? Now you already know कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब होगा? प्यूबर्टी पर. तो आप लोगों को पता है जो पहली सेक्स सेल होती है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, दे आर इमेच्योर. अब ये प्यूबर्टी तक, अब मुझे फटाफट से बता दो प्यूबर्टी किस एज में आती है मेल्स में. फटाफट से द चैट बॉक्स जस्ट टाइप इट एट विच एज द प्यूबर्टी कम्स इन मेल्स. तो आपको पता है तब तक स्पर्मेटोगोनिया जो है या स्पर्मेटोगोनियम जो है दैट विल बी लाइक इमेच्योर, राइट? और प्यूबर्टी पे ही इट विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग, राइट? तो यस, अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है यू ऑलरेडी नो इट इज 46XY, और हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? 44+XY. ये क्रोमोसोम नंबर इसका. वी हैव 46XY और या हम्म या एवरीवन इज राइट, अप्रोक्सीमेटली 12 to 16. ठीक है, ओके. नॉट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ ठीक. ठीक है 14. ओके ओके, एग्रीड एग्रीड. चल, तो स्पर्मेटोगोनिया, ओके, you already know basically it contains 46 chromosomes, या हम 46XY लिखते हैं या फिर 44+XY लिखते हैं, ठीक है. Now this spermatogonia will differentiate into two types. It will differentiate into two types, okay. The very first one, remember, it is called as the dark spermatogonia. Stain dark है, तो yes, it is the dark spermatogonia, okay. And we have something which does not take the stain, and it is called as the pale spermatogonia. बेटा कंसेप्चुअल पढ़ना बहुत जरूरी है अभी इस टाइम पे ना. कंसेप्चुअल स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यस, इट इज पेल स्पर्मेटोगोनिया. नाउ, अब डार्क स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या होता है? इट keeps undergoing mitosis. It keeps undergoing mitosis until stores are replenished. ओके, तो ये डार्क स्पर्मेटोगोनिया जो है व्हाट इट विल डू, it will continuously form the spermatogonia only. Okay, it will divide and continuously form the spermatogonia only. So yeah, pale spermatogonia it is also called as the type B spermatogonia. Okay, डार्क वाले को टाइप ए बोलते हैं, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया. एंड दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, तो इस पर डॉलर मार्क कर लो. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम. सो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया will undergo mitosis. Okay, it will differentiate, ये खा पी कर बड़ा हो जाएगा. Okay, and it will differentiate into something which is called as the primary spermatocyte. Okay, it will differentiate into primary spermatocyte. चलो, अब क्वेश्चन है मेरा सब लोगों से, मुझे मेरा क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. चलो फटाफट से बताओ. मीनवाइल आई जस्ट करेक्ट द स्पेलिंग्स. या फटाफट से इसका मुझे प्लॉइडी लेवल बताइए. या प्लॉइडी लेवल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. यस 2n रहेगा. तनुप्रिया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. मैंने बोला माइटोसिस है तो यस. डिम्पल श्रावणी वेरी गुड. गरिमा, धनश्री, रोहित, यस. नारायण ट्रैवल एक्सपर्ट वेरी गुड वेरी गुड.
कपिल, हर्षित, मुस्कान, कृति, जशिता, सिद्दीक, वेरी गुड। मतलब बिल्कुल आंसर्स एकदम आ रहे हैं, तो आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है कि माइटोसिस में द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, तो ऑब्वियसली इट विल बी 44 प्लस एक्स वाई, 46 ही रहेंगे, राइट? तो या इट विल डिफरेंशिएट इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया कहां से आ रहा है? एपीब्लास्ट से आ रहा है। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एपीब्लास्ट, ओके। और माइग्रेशन कहां से हो रहा था? योग सैक से, राइट? तो ये सब चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए बेसिकली। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में व्हाट विल हैपन? देयर विल बी समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द फर्स्ट meiotic डिवीजन। अब मुझे बता दो, अब फर्स्ट meiotic डिवीजन हो रही है, ठीक है। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। These structures are called as secondary spermatocyte। अब फटाफट से बताओ secondary spermatocyte का priority level क्या होगा? Yes, pilot, semi, okay. Yeah, you are right. I hope you have answered for this particular question. Hmm. Yes. हाँ, Ayush, very good. Kriti, very good. Very good. Perfect. Perfect, guys. Right? Yes, everyone is right. Muskan, Veer, Karima, Jinal, Tanu. Okay. Praveen. Okay. Dimple, Puneet, Narayan, Harshit. Okay. सो यस गाइस, इनका प्रायोरिटी लेवल हो जाएगा, एक में आ जाएगा 22 प्लस एक्स और एक में आ जाएगा 22 प्लस वाई, ठीक है। अब इसको मैं आई विल कंटिन्यू इट ऑन द, ओके। आप लोग एक ही फ्लो चार्ट में कंटिन्यू करेगा, जस्ट ट्राई टू कंटिन्यू ऑन द सेम फ्लो चार्ट गाइस, राइट? आई डोंट हैव स्पेस, सो आई विल मूव, आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आई हैव केप्ट स्पेस देयर। चलो, ओके। तो हम्म, so we have the secondary spermatocytes, right? आपने ये बना लिया, डोंट ड्रॉ इट गाइस, राइट? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, secondary spermatocyte, and what is the ploidy level? It is 22 plus x और ये क्या है? 22 plus y, right? Is 22 plus y. Now what will happen? They will undergo the second meiotic division. Second, yeah, Abukar, I'll explain in English mostly, so don't worry. Yeah, sometimes I'm using Hindi. So yes, second meiotic division. Now, guys, tell me what will happen to this particular. Okay, what will be the chromosome number of the formed cells now over here? Tell me the name of the cells that are formed after the second meiotic division. Yes, Raj Soni, yes, Dhanasri, it's all right. It will remain the same, but can you tell me the name of the cells that are formed after second meiotic division? Yes, these are called as the spermatids. Very good. These are called as spermatids. And remember, second meiotic division मैंने क्या बोला था? Equational division होगी. So the chromosome number will remain same. It will be 22 plus x, 22 plus x. We have 22 plus y and 22 plus y, right? After, yes, spermatid है, तनु के spermato तो अभी नहीं बनेगा. Spermatids are basically globular structure, guys. So yes, we'll discuss about spermatid and spermatozoa, the structures, separately in a couple of minutes. So yes, no need to worry about that. Apart from that, guys, remember, from the spermatids what will form? Sperms, right?
From the spermatids, what will form? Sperms. And these sperms are basically called as spermatozoa. Spermatozoa, and the ploidy level remains the same. It is 22 plus x. It is 22 plus x. Okay, it is 22 plus y, and it is also 22 plus y. So again, start spermatogonium हो गया, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, right? Again we have spermatid and spermatozoa. तो ये 5 order आप लोग को याद होने चाहिए. तो ये 5 orders you should remember, right? Yes. I hope this is clear, guys. I hope this is clear, everyone. The diagram is clear to everyone. Yes. Prashant, hello. ओके, जय, परफेक्ट. अनुष्का, परफेक्ट. चलो फिर कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर्स दे लेते हैं. चलो पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट से, चैट बॉक्स में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो. ओके, यस, प्रशांत फॉर कुर्मी. ओके, seminiferous tubule, very good guys, perfect. It is seminiferous tubules, right? Now the second question, testis may be better. There are two anatomical compartments, mammal cystic, interstitial and seminiferous tubules. Seminiferous is the one where this is taking place. Yes, everyone is right. Dimple, Puneet, Dhanishri, Shailesh, Tanu, Kapil, everyone is right. Garima, very good. The second question is time for spermatogenesis. Now, can you tell me what is the time that is taken for spermatogenesis? Yes, Avishkar says 10 weeks. Okay, Avishkar, agreed. Yes. Kriti Khandelwal, 74 days. Actually, Avishkar, the answer will be approximately 72 to 74 days. Okay. और इसमें से भी if you have guys one of the okay now अगर इसमें से भी बोला जाए which is the best one to choose in the paper, that will be 74 guys. 74 will be the best answer. So it is ideally up to 72 to 74 days, and the best answer would be 74, right? So that is the ideal time for the spermatogenesis to take place. That is again an important question. We'll discuss questions PYQs also. हम लोग MCQs भी discuss करेंगे. आज भी मेरे पास कम से कम I have included 8 to 10 MCQs. That these are the past year questions that are there. Yes. 74 days. Yes, everyone is right. Prisma, Siddiq, Tanu, Osama, Salesh, Kapil. Everyone is okay. So apart from that, guys, remember we have something which is called as spermiogenesis. So spermiogenesis basically means transformation of spermatids to sperms. Transformation of spermatid to sperms या spermatozoa भी बोल सकते हैं. As Anushka already told in the chat box, it is spermatozoa. Okay. अब ये आप लोगों ने अभी पहले ही देख लिया, ठीक है. सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज, यस, दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है गाइस, याद रखना स्पर्मेटिड है. स्पर्मेटिड से इट इज कन्वर्टिंग इनटू स्पर्मेटोजोआ, इसी प्रोसेस को बस, ठीक है. स्पर्मेटिड्स में टेल नहीं होती, देख लो यहाँ पे टेल लग गई है नीचे. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस. Yes, it is called as spermiogenesis. Okay. Apart from that, इसमें दो क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं. One is there is no mitosis or meiosis. There is no mitosis or meiosis. Okay. यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होती, ना तो माइटोसिस होती है. There is no meiosis also. Okay. The last question for spermiogenesis, what is the time taken for spermiogenesis? Time taken for spermiogenesis, बताइए जल्दी in the chat box. What is the ideal time taken for spermatogenesis?
I'm waiting for your answers. हम्म, चल बताइए फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर। नो आइडिया, कोई बात नहीं। चल, यस, नो आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है। सो रिमेंबर गाइस, टाइम टेकन फॉर स्पर्मियोजेनेसिस इट इज 14 डेज। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में 74 डेज लग रहे हैं, ओके, सो रिमेंबर गाइस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना, और स्पर्मियोजेनेसिस तो बस लास्ट का प्रोसेस है, तो उसके लिए द आइडियल टाइम इट इज 14 डेज। 40 डेज नहीं है। फिर राज, ओके, ओके 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 गाइस, चलो, आई होप दिस इज क्लियर नाउ, और इसके ऊपर डॉलर लगा लेना। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर स्पर्मियोजेनेसिस? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा है या स्पर्मियोजेनेसिस पूछा है, ओके। सो चल, नेक्स्ट आ जाओ, स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड आप लोग को अभी बताया था मैंने, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा स्पर्मेटिड का, ओके। हम्म, सो रिमेंबर गाइस, स्पर्मेटिड, हम्म, so spermatid basically it contains a nucleus, okay, it contains a nucleus, okay, spermatid basically contains a nucleus. Now apart from that, this spermatid will contain something which is called as the Golgi complex. I'm just drawing a very freehand diagram, so please, Golgi complex. Now this spermatid will contain numerous mitochondria, okay. This spermatid will contain variety of mitochondria, and remember guys, at one end of the spermatid we will have these two centrioles, centrioles, okay. नाउ ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है इसके अंदर। दिस इज वाज द बेसिक वन कि व्हाट वी आर एक्चुअली विजुअलाइजिंग ओवर इन द स्पर्मेटिड। वी हैव द न्यूक्लियस, द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, वी हैव द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंड वी हैव टू सेंट्रियोल्स, ओके। तो रिमेंबर गाइस, अब इसमें आप लोग को याद रखना है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो नॉर्मल स्पर्म होता है, स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होता है? स्पर्म में, राइट। एवरीवन नोस दिस कि स्पर्मेटिड विल कन्वर्ट इनटू स्पर्म। तो मुझे फटाफट से बताओ कि व्हाट विल गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म? Yes, Golgi complex will form the acrosomal cap, right? Or it will form the acrosomal cap. The nucleus will transform, or it will contribute to the head of the sperm. Head of the sperm. Mitochondria will transform into the middle piece of the sperm. It will transform into the middle piece of the sperm, right? And we have two centrioles. One centriole will transform into the neck region, transform into the neck region,
and one transforms into tail region. Okay. So yes, in the tail region, it will form the axial filament. Axial filament. और फटाफट से मुझे बता दो एक्शियल फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, व्हाट इज द अरेंजमेंट। ये 11th क्लास की थोड़ी सी है, अगर नॉलेज तो फटाफट से बता दो एक्शियल फिलामेंट का वो क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होता है। हम्म। चलो, यस जय, वेरी गुड वेरी गुड, यस जय, इट इज 9+2। ये जो टेल में होता है ना एक्शियल फिलामेंट, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर, दैट इज एक्चुअली 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है, तो या दैट्स नॉट अगेन एन इम्पोर्टेंट पार्ट। या so I hope all the parts are clear, and which part will transform into which part of the sperm, it is also clear। सर ये सीरीज कंप्लीट हो गई, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उमर क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, क्लासेस का पूछ रहे हो तो क्लासेस कंटिन्यूड है, उसमें घबराने की बात नहीं है। चल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, और स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को पता ही है। तो एक्रोसोम हो गया, हेड पार्ट हो गया, हेड के अंदर न्यूक्लियस आ गया, तो न्यूक्लियस एंड द एक्रोसोमल, ये तो पूरा का पूरा हेड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वी हैव द नेक पार्ट, राइट, वी हैव द नेक पार्ट, वी हैव द मिडल पीस विच कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और टेल है, और टेल के अंदर क्या है, एक्शियल फिलामेंट। एक्शियल फिलामेंट। अब एक्शियल फिलामेंट से ना दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, दो क्वेश्चन आए हुए हैं एक्शियल फिलामेंट से। सो रिमेंबर दैट द एक्शियल फिलामेंट बेसिकली कंटेन्स वन प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज द डाइनिन प्रोटीन। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्शियल filament contains an important protein that is called as the dynein protein, and this axial filament basically it holds various microtubules together, माइक्रोट्यूब्यूल्स टुगेदर। ये फिजियोलॉजी में मैंने पढ़ाया भी था जिसने मुझसे क्लासेस ली हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड इट प्लेज एन important role, okay, it plays an important role in motility of sperm. It plays an important role in motility of sperm. I hope till now everything is clear। चल, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आ गया, स्पर्मेटोजोआ आ गया। ठीक है, स्पर्म स्पर्मेटोजोआ आ गया। चलो निकिता, वेरी गुड वेरी गुड। Everyone else, please give a thumbs up that everything is clear। Yes। Okay। Kindly ignore the comments which are not useful। Useless comments। चल, बढ़िया है, वेरी गुड, एवरीवन इज लाइक ओके। निकिता, नारायण, गरिमा, जय, जशिता, एंजल, महफूज, ऋतिका, मुस्कान, राज, जीनल, कपिल, क्रिस्मा, आदित्य, वीर जोशी, वेरी गुड गाइस, राइट। चलो फिर कुछ क्वेश्चन के आंसर्स कर दो फटाफट से। हम्म। चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ द स्पर्म, जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इसके ऊपर आई विल, ओके, जस्ट फर्स्ट।
हम्म, चलो, यस, 65 मीटर माइक्रॉन्स, हाँ, 50 to 60, नारायण आदित्य, ओके, महफूज अखिल 69 मिलीमीटर, Raj Soni 3 to 5. Okay. So remember guys, the answer over here it is 50 to 60 microns. 50 to 60 microns. Yes. Next question. Fertilizable span of the sperm. Okay. Fertilizable span of the sperms, guys. Right. Next question. Answer fast. Yes. 5 to 7 days. प्रशांत, तुम्हारे स्पर्म का इतना फर्टिलाइजेबल स्पैन है। एवरी मंथ सब एक धड़ल्ले से आंसर देते हैं बिल्कुल। गॉड, अविका, नारायण, ओके, yes guys, again it is 48 to 72 hours. It is 48 to 72 hours. Yes, yes, a day. Dhanupriya. Okay, guys. I hope it is clear now. It is 48 to 72 hours. Beta, follow the latest updates, right? जितना भी notes लिखवाया जा रहा है, it is according to the latest update. Yes. हम्म, चलिए, sperms are formed in, ये तो अभी आंसर दे दिया है, seminiferous tubules. Okay, they are formed in seminiferous tubules, and remember they are non-motile and immature. They are non-motile and immature. Okay, they are non-motile and immature. Now guys, they are emptied into a duct, into a network of ducts called, okay, can anyone answer this question? Before that, I'll just take you to the diagram also. Okay, they, yes, I want this answer. They are emptied into, नहीं बेटा, vast difference नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ये दिख रहे हैं, ये सेमनीफेरस टिब्यूल्स है जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। दीज आर द सेमनीफेरस टिब्यूल्स व्हिच आई एम हाईलाइटिंग। और अगर ये हाईलाइट, तो ये सेमनीफेरस टिब्यूल्स है। यस, रेटेड टेस्टिस, वेरी गुड, एवरीवन इज राइट, जय, वेरी गुड। देखो, सेमनीफेरस टिब्यूल से स्पर्म्स बन के कहां पे जा रहे हैं, ये बिल्कुल नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स अगर आप देखो, सो दीज आर कॉल्ड एज रेटेड टेस्टिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटेड टेस्टिस। सो जो स्पर्म सेमनीफेरस टिब्यूल में बन के तैयार हुआ है, द स्पर्म्स व्हिच आर लाइक फॉर्म्ड इन द सेमनीफेरस टिब्यूल will be emptied into the rated testis, right? Will be emptied into the rated testis. So remember that the sperms, okay, they are emptied into a network of ducts which are called as the rete testis. They are emptied into a network of ducts which are called as the rete testis. Yes. Now, from rete testis, the sperm will reach which structure, guys? Tell me. From the rete testis, the sperm will reach, yes, efferent नहीं है, हाँ, from the rated testis the sperm will reach, चलो डायग्राम पे दोबारा आ जाओ, sperms will reach which structure? efferent ductule से होते हुए ये किस में आ जाएगा, epididymis में, it will come into the epididymis. Okay, it will come into the epididymis. Everyone is right. Shravani, Pilot, Tanu, Osama, Dhanishri, Raj, Soni, Anushka, very good. It will be emptied into the, okay, it will come into the epididymis. The sperms reach the epididymis. Now, this epididymis basically has two parts, and this is again an important question. इस पे तो डबल डॉलर लगा लेना, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन. This epididymis basically has two parts. We have the proximal part. We have the proximal part, and apparently we have something which is called as the distal part of the epididymis. Okay, distal part. Proximal कहने का मतलब है हेड पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस, और डिस्टल कहने का मतलब है
द कॉर्डल एंड, या फिर हम इसको टेल एंड भी बोलते हैं एपिडिडाइमिस का. इट इज कॉल्ड एज द कॉर्डल एंड और द टेल एंड ऑफ द एपिडिडाइमिस, राइट? यस. नाउ the proximal part is the part of the epididymis where the sperms will attain maturity. Sperms attain maturity. The sperms attain maturity. Now, the distal part is the one where the sperms attain motility. Motility. Okay. So we have two parts of the epididymis. जो ऊपर वाला part है, that is the head part or the proximal part of the epididymis, जहां पे sperms maturity attain करता है, और distal part it is the one where it attains its motility. ओके okay? और मोटिलिटी के लिए एक आपको ये याद रखना है कि for the motility guys, for the motility, remember that there is a protein that is called as, yeah, this is called as the beta defensin protein. Beta defensin protein 126, okay, which helps with attainment of motility. Okay, so this is again an important question, so इस पे भी डबल डॉलर लगा लेना. So epididymis has two parts, right? So we have the proximal part or the head part of the epididymis जहाँ पे sperm maturity attain करता है, and the distal part where the sperm attain the motility. Along with that, the one which is the protein which is involved in the motility, it is the beta defensin protein 126, right? Apart from that, guys, yes, apart from that, remember the next question, that epididymis acts as a reservoir of sperms. Okay, the epididymis acts as a reservoir of sperms until ejaculation, and the time taken for epididymal maturation, epididymis में जो mature हो रहे हैं, it is approximately 2 to 14 days. It is again a question that is being asked, right? It is again a question that is being asked. I hope all the questions, yeah, yes. All the important points have covered in this particular slide. I hope this is clear to everyone. और उससे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर आपको ध्यान से देख रहे हो डायग्राम में, तो ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है, टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस. तो स्टेमनिफेरस टिब्यूल से रेटे टेस्टिस से इफ्रेन डक्ट्यूल्स के थ्रू इट विल कम इनटू द एपिडिडाइमिस. इट विल कम इनटू द एपिडिडाइमिस. यस. Okay, I hope all the points are clear, guys. I hope all the points up till now are clear. So just give me a thumbs up that everything is clear. Yes. Shall. Okay. Dhanashri. Okay. Kapil Jay. Very good. Very good. Narayan Aditya, Garima, Raj, Rohit, Jessita. निकिता, महफूज, पीटर. बेटा रिप्लाई करते रहा करो, बिकॉज अब क्या होता है लाइव सेशंस में ना, हम तो देख नहीं पाते तुम लोग क्या कर रहे हो पर्दे के पीछे. तो रिप्लाई एकमात्र वो है क्या कहते हैं, जिससे मुझे पता चलता रहता है दैट, या, कि मैं एम नॉट टीचिंग वॉल्स ओवर हियर. तो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ साथ. वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, और लीमा, सोनी, एंजल, नाइक सब है यहाँ पे. चलो ठीक है, बढ़िया. तो घर पे तो मुझे पता है बोर हो रहे होगे, कुछ मिल नहीं रहा होगा घर पे. सो चल ठीक है, कुछ नहीं तो क्लास ही ले लेते हैं. हम्म. चल. पायलट सैनी, वेरी थैंक यू बेटा, वेरी मच. ये स्प्लिट्स विला वाले बेटा मेरे से पर्सनली बात करना, तुम ये मत ड्रामा क्रिएट करो यहाँ पे. हाँ. मुस्कान, इसका ये मतलब है कि इसमें एक तो सबसे पहली बात क्या कहते हैं,
हाँ, ये और ज्यादा मेच्योर हो जाएगी, ठीक है। तो एंजाइम्स एंड एवरीथिंग विल डेवलप, ओके, मोर माइटोकॉन्ड्रिया विल डेवलप फॉर मोटिलिटी, राइट। तो ठीक है, मतलब यस, acrosomic enzyme होता है. Can anyone tell me that enzyme? What is the enzyme that is present in the acrosomal part? Yes. ये अखिल तेजा को तो ब्लॉक कर दो. The technician, if he is listening me, please block अखिल तेजा. Yes, जय विराट. Hyaluronidase, very good. ये पेनिट्रेशन के काम आता है, देखो, और एंजाइमल मेचुरेशन भी है, बहुत कुछ आ जाता है उसमें. तो यस. हम्म. चलो, ब्लड टेस्टिस बैरियर. चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ब्लड टेस्टिस बैरियर, और इसी में आप लोगों को, ओके, ब्लड टेस्टिस बैरियर को बेटा बोला जाता है सर्टोली, सर्टोली बैरियर. अब इसको समझने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं. पहले एक डायग्राम बनाएंगे. एक डायग्राम से I will draw one diagram guys, and from that particular diagram everything will be clear. Yes, from one particular diagram like everything will be clear. तो एक डायग्राम पहले हम लोग बनाते हैं. हम लोग क्या करते हैं, पहले क्रॉस सेक्शन, क्योंकि टेस्टिस में भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट. सो रिमेंबर गाइस, वी हैव, तो हम एक क्रॉस सेक्शन लेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का. सो now guys, remember that suppose this is cross section of seminiferous tubule, seminiferous tubules, and you already know seminiferous tubules में we have cells which are called as the Sertoli cells, right? We have cells which are called as the Sertoli cells. Now these Sertoli cells are cuboidal shaped cells which are having these finger-like appendages. Okay, these Sertoli cells are cuboidal shaped cells which are having appendages. तो मैंने seminiferous tubules को I have just cut it from between. Yeah. So now what I will be able to see over here, we have these Sertoli cells. Now these Sertoli cells, remember guys, these are cuboidal cells. These are cuboidal cells, and these contains appendages. These finger like projections जो दिख रहा है ना, these are called as appendages. तो seminiferous tubules के पूरे साइड पर ना बेटा, you will find all over the side we have the seminiferous tubules, I mean the Sertoli cells, and in between there is lumen. In between there is the lumen. Okay, lumen मतलब होता है खाली जगह होता है, ठीक है. Now guys, remember that between the Sertoli cells, you can see that there is formation of some these tight junctions which I am highlighting with red. So this is something which is called as the tight junctions. Tight junctions, and remember these tight junctions are present between Sertoli cells. Sertoli cells. Now this is something which is called as the blood testis barrier. This is something which is called as the blood testis barrier. This is something which is called as the blood testis barrier. अब कहोगे सर इसमें blood तो है ही नहीं कहीं. So again guys, remember that this is a misnomer. Okay, this blood is a misnomer. Actually में ये जो barrier है that is created because of this Sertoli cells only. तो इसलिए हम इसको Sertoli barrier भी बोलते हैं. Okay, इसलिए हम इसको Sertoli barrier भी बोलते हैं, ठीक है. Now अब इसको एक और डायग्राम से समझेंगे, कि अब इसमें अगर मैं एक डायग्राम और लूं which is actually called as the cross section of testis. Okay, so we have something which is called as the cross section of testis, और testis के cross section में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, so remember guys कि
For example, if I'm drawing the sperm, okay, स्पर्म्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेच्योर्ड वाले जो स्पर्म्स होते हैं ना बेटा, वो बिल्कुल बीच में होते हैं। और स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो अलग अलग डिफ्रेंशिएटिंग जो स्पर्मेटोसाइट्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स हैं, ये सारे मतलब बिल्कुल पेरिफेरी से ल्यूमन में आते हैं। तो ल्यूमन में ऑफ द सेमिफेरस ट्यूब्यूल यू विल फाइंड द मेच्योर स्पर्म्स, ठीक है। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं स्पर्म्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल these are the germ cells or the sperms, right? These are the germ cells or the sperms. और इन germ cells और sperms के पास you will find these Sertoli cells. I'm just drawing a very layman diagram just to make you understand guys कि Sertoli cells के अंदर आपको ये पूरे के पूरे germ cells मिलेंगे, ठीक है, the sperms. Now this is what, this is the Sertoli cells. Sertoli cells. और ये जो ब्लू वाले मैंने जो बनाए हैं, these are the germ cells, right? These are the germ cells, right? These are the germ cells. So you are in Almaty or India? I'm in India, guys, right now. Now, guys, we have something which is called as the blood vessels. Okay, Sertoli cells के बाहर you will find something which is called as the blood vessels. So this is the blood vessels. और इन blood vessels के बाहर आपको देखने को मिलेगा, you will find another type of cells over here, and these are called as the Leydig cells. Okay, these are called as the Leydig cells. Now, what happens, beta? These Sertoli cells, due to the presence of the tight junctions in between these Sertoli cells, whatever toxins that are coming in the blood, they will not be able to reach the germ cells. क्यों नहीं germ cells तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि Sertoli cells के बीच में tight junctions हैं. So they don't allow the toxins and any infection coming from the blood to reach the germ cells. And that's why it is called as the Sertoli barrier that prevents the germ cells. That is why it is called as the blood testis barrier. So blood barrier basically it is not because of the something between the Sertoli cells and the blood vessels. It is in between the Sertoli cells, the tight junctions in between the Sertoli cells that does not allow any infection from the blood to come and damage the germ cells. Okay, so yes, now I have a question over here, guys. I have a question over here. Key, which cells lies outside the blood testis barrier? This was again a question which was asked in the exam, FMG exam. Which cells are lying outside the blood testis barrier? तो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. So remember that we have a question. Leydig, हाँ, yes, Shravani, very good. ये बहुत सही आंसर दिए, yes. So remember that cells outside the blood testis barrier, cells outside the blood testis barrier, it is the Leydig cells. Yes, it is the Leydig cells. It is the Leydig cells. Yes. Now this Sertoli cells, basically they are acting as a barrier between the blood vessels and the germ cells. So remember, they are acting as a barrier between the germ cell and blood vessels.
Okay. So any toxin which is present in the blood is not able to get in due to the tight junctions that are present between the Sertoli cells. I hope this particular picture is clear to everyone. I hope this particular picture is clear to everyone. So kindly give me a thumbs up, guys. Yes. Ahmed Khan, very good बेटा. Kindly be in the session, guys. कम से कम इतनी कैपेसिटी रखो कि 2 ढाई 3 घंटे आराम से बैठ सको टिक के एक बार में. Yes. चलो बढ़िया बढ़िया वेरी गुड. एंजल मैथ्यूज, जय, डिम्पल, राज, आदित्य, पायलट, तनु, मिजाज, तारा, रोहित, कपिल, गरिमा, वीर, हर्षित, नागिरेड्डी, सरिष्ठा, ओके, क्रिस्मा, एजे एंटरटेनमेंट, इशिता, ओके, परफेक्ट गाइस. आई होप एवरीथिंग लाइक गोस वेरी स्मूथ. या मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक चीज हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं. सो यस. हम्म. चलो. यस यस अनुष्का, अगर देखा जाए तो जर्म सेल्स तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है. ठीक है. और उसमें भी जो मेच्योर वाले जो स्पर्म्स होते हैं वो बिल्कुल ल्यूमन में होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के, राइट. और अगर पेरिफेरी पे देखा जाए तो मतलब जो मेचुरेशन वाले जो जर्म सेल्स है, मींस द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, वो मिलेंगे पेरिफेरी पे. ल्यूमन में आपको पूरा का पूरा मिलेगा, तो बहुत ही ज्यादा इनरमोस्ट हो जाता है. और सर्टोली सेल्स होते हैं बाउंड्री में, तो दे प्रिवेंट द एनी टॉक्सिन कमिंग फ्रॉम द ब्लड टू रीस्टार्ट ड्यू टू दीज टाइट जंक्शंस. ठीक है बेटा. हाँ आदित्य, वीर, ओके. चल. नेक्स्ट, hormonal support for spermatogenesis. Remember guys, we have a structure that is called as hypothalamus. Again an important slide guys. एक एक स्लाइड में पूरा पूरा टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए प्लीज ध्यान से डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स वट एवर आई एम ड्रॉइंग इन माई क्लास, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कोई आपको ग्रंथ नहीं लिखवा रहा हूँ. आई एम नॉट मेकिंग यू राइट लाइक 1000 pages of notes. One slide which I am discussing, that is effectively more precise, crisp, concise, and all conceptual. So whatever I'm discussing, guys, please note it down there and then. Now, this hypothalamus will release one hormone that is called as GnRH. That is called as the gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone. Yes, this gonadotropin releasing hormone will act on, it will act on anterior pituitary. It will act on anterior pituitary. Pituitary gland की लोकेशन बता दो परफेक्ट वाली फटाफट से. If you guys know the location of the pituitary gland, kindly text me in the comment section. Meanwhile, I'm just completing the flow chart. Yeah, this anterior pituitary will release two hormones. One, it is called as the FSH, and the other one, it is called as the LH. Yes, Jay, very good. It is the Sella turcica. Uh, Anushka, very good. Pretty, fun mode, okay. Sella turcica, very good. Very good, bit up, pilot. Yes. So we have the FSH and LH. FSH basically stands for the follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. And LH stands for the luteinizing hormone. Yes, Nitika, very good. Luteinizing hormone. Now, FSH
will act on, it will act on FSH में ध्यान रखना बेटा, S आ रहा है, FSH में S आ रहा है. So remember that it will act on Sertoli cells. It will act on Sertoli cells, and one important hormone will be produced that is called as inhibin B. Inhibin B is released. Inhibin B is released. Inhibin B is released. Yes, inhibin B is released. So yes. तो अब मैंने आप लोग को बताया कि हाइपोथैलेमस है, it will actually release gonadotropin releasing hormone, and it will act on the anterior pituitary, and two hormones will get stimulated, that is the FSH and LH. FSH will act on the Sertoli cells and it will produce one hormone that is called as the inhibin B. And this inhibin B, remember guys that it will have a negative feedback on FSH. It will have a negative feedback on FSH. Inhibin का होना भी जरूरी है. Why it is important? Because at time it will come when there is no requirement of FSH. तो उसको suppress करना भी जरूरी होता है. That is due to the hormone, and that is something which is the inhibin B, which is released from the Sertoli cells once the FSH stimulates the Sertoli cells, right? Now luteinizing hormone, L से L याद रखना है बेटा. It will act on Leydig cells. दो ही सेल्स पढ़ा है अभी तक, Leydig cells. So it will act on the Leydig cells. Now guys tell me, Leydig cells will release which hormone? Now guys tell me, Leydig cells will release which hormone? Yes, Leydig cell will release. Yes, it is testosterone. Yes, very good. Palate से नहीं, it is testosterone. So it will release testosterone, and this testosterone will have a positive support for spermatogenesis. Spermatogenesis. Now, spermatogenesis, basically the support, it is also done by FSH. It also has a positive feedback. LH also has a positive feedback on spermatogenesis. Yes, yes. So the question which has come in the exam, the major support for spermatogenesis, it is basically by which hormone guys? FSH, LH or testosterone? Okay, there are three options guys. Major support for spermatogenesis, it is like I have three options: FSH, LH or testosterone. Anyone who would like to, anyone answer it first? Yes, Anushka, very good. It is the testosterone that is actually the major support for spermatogenesis. Okay, it is the testosterone. And apart from that, one more question that you guys have to remember, that FSH and LH also support spermatogenesis. FSH and LH also support spermatogenesis. अगर guys इन तीनों में, if there will be a defect in all the three, the levels of all the three hormones, right, what will happen? That there will be defective spermatogenesis. Sperms will not form, like they will, yeah, they'll be not the matured one, right? So that can lead to azoospermia. Okay, the infertility problems in males. Okay, so the levels of these hormones should be like optimum. Yeah, the levels of the hormones should be optimum, right? So hormonal support is done.
Yes, it will lift. Yeah. Now, sperm capacitation. Now, guys, what is sperm capacitation? Remember, guys, that sperm capacitation basically means ability of sperm to fertilize the ova. Ability of the sperm to fertilize the ova. Ability of the sperm to fertilize the ova. Okay. Now, the sperms are stored in epididymis. मैंने आपको पहले ही बताया था epididymis में stored होते हैं and they are mature but they cannot fertilize ova. Again, sperms are matured in epididymis but they are not that mature to fertilize the ova. The final step that makes the sperm capable of fertilizing ova is called capacitation. कहते हैं ना हाइपर मोटिलिटी जो आती है that is actually due to capacitation, right? Time taken for capacitation, it is actually, remember, it is 7 hours, right? It is 7 hours. Okay. Time taken for capacitation. Sperms attain motility in, okay, you already know it attains motility in the distal part of epididymis. Distal part of epididymis, or I can simply say the caudal end of epididymis. Sperms become hypermotile, guys. Now, hypermotile in cervix. Hypermotile in cervix. So, guys, remember that we have, you already know the structure of the female genital tract, right? So, this structure it is called as the cervix. You already know the uterus, fallopian tube, or last, may you already know we have the ovary, right? Ovary. So, cervix may, okay, cervix में the sperms become hypermotile. Motility attain हो गई, that is the distal part of the epididymis, but again it will become hypermotile, guys, in cervix part of the female. Okay, in the cervix part, that is the part of the female reproductive tract. Female reproductive tract, right? Vagina acts as a reservoir for sperm for about, remember, it is for about 2 hours, right? And the cervix basically acts as a reservoir for 3 days. It will store the sperm for 3 days. If sperm remains in vagina for more than 2 hours, they become immotile. They become immotile. So these are again important questions on capacitation of the sperm. These are again important questions on capacitation of sperms. Yes, these are again important questions on capacitation of sperm. So I hope it is clear to each and everyone over here. So let's now discuss this question. Question number one. Time taken for capacitation of sperm is, answer guys, 1, 2, 3, or 4. Come on, guys. Answer the question fast. Anushka says 3. Raj Soni, okay, 2. Perfect. श्रावणी मुस्कान, नहीं श्रावणी 2 to 4 नहीं है बेटा, अभी कैपेसिटेशन मैंने अभी आपको बताया था, कैपेसिटेशन के लिए न्यूमरसली 7 hours लगते हैं ना बेटा, 7 hours है. द आंसर विल बी 3. या इट इज 6 to 8 hours. क्वेश्चन में देखो 7 नहीं दिया हुआ है, 6 to 8 दे रखा है ऑप्शंस में, तो यू गाइस हैव टू रिमेंबर. यस, so this is 6 to 8 hours. Okay. Next question. Sperms attain motility in. Sperms attain motility in. Again, these are all PYQs, past year questions. Already, I've already discussed this. Yes, Nitika Ghosh, very good. 2. Avishkar, Muskan Kapoor, Garima, Sarishta, very good, very good. Dimple, very good. It is the caudal end of the epididymis. It is the caudal end of the epididymis. Again, one more question. Time taken for spermatogenesis is. Time taken for spermatogenesis is.
Yes, yes, it is 2 or 3. या पहले टू आंसर किया था फ्रेडरिक ओके नो इट्स रॉन्ग या ओसामा सत्यश्री शरिष्ठा वेरी गुड इट इज 70 to 80 days और मैंने आपको लिखवाया था बेस्ट आंसर विल बी 74 और अगर 72 to 74 लिखवाए बेस्ट विल बी 74 और अगर इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं सो ऑब्वियसली ये तो पूरा का पूरा होल नंबर है तो या द आंसर विल बी थर्ड 70 to 80 days. Yes. Now, before coming to the oogenesis, guys, I hope everything is clear that we have discussed up till now. फटाफट से एक thumbs up दे देना. I have discussed about the definition of embryology up till now, the gametogenesis, the basic part, right? The primordial germ cells, the mitosis, meiosis phases of cell cycle, spermatogenesis, the compartments of the testis, all the process of spermatogenesis, right? I have discussed important questions. Okay, I have discussed spermatid structure of sperm, all the questions related to the sperm, spermatogenesis, blood testis barrier, hormonal support of spermatogenesis, and capacitation. All the topics I have completed, guys, and some PYQs, that is the past year questions I have completed. So one part of today's lecture is over. Yes. Okay. I hope everything is like crystal clear to everyone. Aditya, Sarishta, Nitika, Krishma, Garima, Tanu, Ishita, Satyashri, Muskan, Jeshita, Veer. Okay. I hope the concepts are crystal clear to everyone. Yes, Tanupriya, very good. So let's start with the oogenesis also. Guys, please be with me throughout the lecture. If you have to like see, um, I have a message to everyone over here who is watching the lecture. If you guys want everything to be discussed in like full conceptual manner, so you have to give time. Okay, so it's better if you just be with me and like learn simultaneously with me. बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं है ओके फिर आप स्लेडो से क्या फर्क पड़ जाएगा लाइव चीज ही ऐसी है कि आपको इट बाउंस यू टू द स्क्रीन कि आप बैठ के उसको लिखोगे ठीक है तो यस लेट्स स्टार्ट विद oogenesis guys yeah let's start with oogenesis but I will to teach now I have to discuss the topics today as well so oogenesis remember that it occurs or it begins in intrauterine life सबसे पहला डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस होती है प्यूबर्टी पे oogenesis स्टार्ट हो जाती है इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब बच्चा अपने मदर के वॉर्म में है ठीक है सो रिमेंबर इट इज द इंट्रायूट्राइन लाइफ वेयर द oogenesis will start right yes now remember guys that there is something which is called as the oogonia ये जो डायग्राम है द डायग्राम विच द फ्लो चार्ट दैट आई विल ड्रॉ गाइस ये साथ साथ बनाते रहिएगा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट yes so remember guys that we have the very first cell that you already know we have the oogonia मैंने बताया था ना ओगोनियम और oogonia right now remember that oogonia basically contains 46 chromosomes okay or it is 44 plus XX okay this oogonia it is also called as the female germ cell it is also called as the female germ cell it is also called as the female germ cell now this oogonia will undergo mitosis it will undergo mitosis and it will form primary oocyte. Now guys, tell me what will be the chromosome number of the primary oocyte. Now tell me guys, what will be the chromosome number of the primary oocyte? Primary oocyte, it is 46XX or 44 plus XX.
है ना? हाँ, वेरी गुड। यस, एवरीवन इज राइट। इशिता, श्रावणी, आदित्य, तनुप्रिया, Panmode, Kriti, Dimple T, Mizan, very good. Okay. Now, guys, remember that primary oocyte will undergo meiosis 1. Now, meiosis 1, it is the reductional division, guys, right? The chromosome number will become half. But over here, there is a catch. The meiosis 1 does not complete. It starts, but it never completes in the intrauterine life, right? So remember that this meiosis 1 will be get arrested in diplotin stage of prophase 1. It will be getting arrested in the diplotin stage of prophase 1. It will be getting arrested in the diplotin stage of prophase 1. अब प्रोफेज 1 के कौन से 4 स्टेजेस होते हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज 1? डिप्लोटीन इज वन ऑफ देम। तुम्हें चारों के नाम पता है? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। देखो, क्वेश्चन राउंड तो चलता ही रहेगा, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के तो मजा आएगा नहीं। तो वो वाली टीचिंग नहीं है कि बस मैं लिखता जा रहा हूँ और आप लोग गधों की तरह कॉपी डाउन करते जा रहे हो, तो फिर गूगल से पढ़ लो। लाइव सेशंस का मतलब ये है कि वी आर इंटरेक्टिंग बोथ वेज, राइट? यस। डिप्लोमा जाइगोपैकी ओसामा, डिप्लोटीन पैकाइटिन पैकाइटिन जाइगोटीन। ओके, इसको ना आगे से याद रखना। एक निमोनिक दे देता हूँ, अगर जिसको हिंदी आती है, द पर्सन हु नो हिंदी, इट विल लाइक बी वेरी इजी। वी ऑलरेडी नो लेप्टोटीन, zygotin, pectine, and diplotin. Diplotin is the last one, the last stage for the prophase one. तो इसको याद रखेंगे, लहराती जुल्फों पर दिल दीवाना। लहराती जुल्फों पर दिल दीवाना, इट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन एंड डिप्लोटीन। ओके। हाँ हाँ, वो सामा में समझ गया, वो इतने सारे नाम है ना। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, लहराती जुल्फों पर दिल दीवाना। तो अब तुम लोग को याद रहेगा और ऑर्डर भी याद रहेगा अब हमेशा के लिए। ठीक है। हाँ, लास्ट में डायकाइनेसिस है, ठीक है। वो मैं लिखना भूल गया हूँ। दिल दीवाना, डी से याद रख लेना। लास्ट वन इज फॉर डायकाइनेसिस। ओके। हाँ, चल, उससे खैर काम नहीं है, यहाँ पे काम सिर्फ मुझे डिप्लोटीन स्टेज से है। सो दिस अरेस्टेड स्टेज, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, इस पे डॉलर लगाएंगे। दिस अरेस्टेड स्टेज, this arrested stage is called as dictate stage. This is called as the dictate stage, right? This is called as dictate stage. Okay. Now, this question has been asked in the exam. Again, दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड से कि meiosis 1 it started in the intrauterine life, but it is not completed. वो बीच में ही रुक गया, and which stage? That is the diplotin stage of the prophase 1, right? Now, this arrested stage, it is called as the dictate stage. Now, there was a question in the exam in which they have asked that which stage is absent in spermatogenesis, and one of the option was the dictate stage. तो आप लोग को पता होना चाहिए आंसर क्या होगा। डिक्टेट, डिक्टेट स्टेज इज ओनली इन oogenesis, it is not seen in spermatogenesis, it is not seen in spermatogenesis. Dictate stage is only present in the oogenesis wala part. Okay, and that is something which is the arrest of the meiosis 1 in the like diplotin stage of the prophase 1, right? So I hope this question is clear. Now, this is about the intrauterine life phase, right? तो यहाँ पे लिख लो कहीं पे,
तो ये पूरा का पूरा ना बेटा इंट्रा यूट्राइन लाइफ ही है। अच्छा, इंट्रा यूट्राइन लाइफ वाला पार्ट हमने डिस्कस किया है अभी। ठीक है, कि हो क्या रहा है वॉर्म में। अच्छा, now remember guys, in the intrauterine life, ovary has many primordial follicles. Okay, और सबसे पहले ये लिखेंगे तो ओवरी, चलो पहले ये लिख लेते हैं कि व्हाट आर प्राइमोडियल फॉलिकल्स, वो भी नहीं पता होगा तो अभी पता चल जाएगा। ओवरी, just make it this way, yeah, in the intrauterine life, okay, the primary oocyte, the primary oocyte gets surrounded by, it gets surrounded by follicular cells of the ovary. Follicular cells of the ovary. For example, अब ये primary oocyte है, ठीक है, this is primary oocyte, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे follicular cells. Now these follicular cells will surround the primary oocyte. और ये follicular cells किसके हैं? ओवरी के. So these are the follicular cells. Now this structure, the entire structure, the follicular cells plus the primary oocyte, it is called as the primordial follicle. It is called as the primordial follicle. Right? Primordial follicle क्या है? Primary oocyte को चारों तरफ से, it is actually accompanying all the follicular cells on its periphery. So that structure it is called as the primordial follicle. Right? Now, so remember that we'll just complete the statement. Follicular cells of the ovary and remember that this structure is called as primordial follicle. Okay, one more point. When a newborn is born, when a newborn is born, ovary has many primordial follicles. Okay, जब भी एक, whenever a newborn female is there, it is the ovaries has many primordial follicles. Okay, numerous primordial follicles are there. Okay, apart from that, one important clinical question that has been asked during menopause, बेटा menopause कौन सी एज में होता है, ये फटाफट से बता दो चैट बॉक्स के अंदर. ओके, मीनोपॉज कौन सी स्टेज में होता है वो बता दो फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर. ड्यूरिंग मीनोपॉज, यस नितिका, वेरी गुड, ड्यूरिंग मीनोपॉज और
there is one more case that is called as the ovarian failure. ये आप गायनी में पढ़ेंगे. Ovarian failure, there will be no follicles in the ovary. There will be no follicles in ovary. Okay. Yes, 50 to 55. बाकी सब सही है. बाकी सब भी आंसर्स देते रहा करो, पता चलेगी तुम लोग क्लास में बैठे हुए हो. ठीक है. There will be no follicles in the ovary, guys. Right? And remember that a test for ovarian reserve, okay, is done to see whether follicles are present in the ovary or not. So that is one of the major causes for infertility also, right? Yes, Jane Alam, very good. That is one of the major causes for infertility as well, right? फॉलिकुलर रिजर्व होना बहुत जरूरी है. ठीक है. ओवेरियन रिजर्व अभी इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि ओगोनिया था. ओगोनिया से क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte, राइट? प्राइमरी oocyte बन जाता है. और प्राइमरी oocyte मियोसिस स्टार्ट होती है, बट मियोसिस कंप्लीट नहीं होती. ठीक है. मियोसिस कहां तक चलती है? इट इज अप टिल द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज. और इस पे क्वेश्चन था कि इट इज आल्सो नोन एज द डिक्टेट स्टेज. इट इज आल्सो नोन एज द डिक्टेट स्टेज. और इसी इंट्रायूट्राइन लाइफ में उसी प्राइमरी oocyte के आसपास पूरे पेरिफेरी पर follicular cells will come and occupy the periphery of the primary oocyte, and this particular structure it is called as the primordial follicle. This particular structure is called as the primordial follicle, right? And this is actually okay. So now let us move ahead and discuss what happens at puberty. So remember guys, at puberty, what is happening at puberty? HPO activates. Okay. HPO का मतलब है हाइपोथैलेमिक hypothalamic pituitary. Yeah, menopause. See, it depends on the age to age, right? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 55 में ही हो जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन द फीमेल. मैं मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स की बात कर रहा हूँ. एवरेज इंडियन पॉपुलेशन. इसको किसी भी एक पर्टिकुलर पे ना वो करे. ठीक है. ये मैंने जन सामान्य की बात की है. ठीक है. मेजॉरिटी. So yes, hypothalamic pituitary ovarian axis. Basically, this gets mature. This gets mature. Okay. Now this hypothalamic, it will release GnRH. और GnRH क्या है? Gonadotropin. Releasing hormone. And remember, it is in pulsatile manner. In pulsatile manner. अब pulsatile का मतलब बताओ फटाफट से चैट बॉक्स में. लेट्स सी. pulsatile का मतलब बताइए. गूगल नहीं करना. Okay. Now this GnRH will act on
the anterior pituitary. Okay, and this anterior pituitary will release two hormones, FSH and LH. Okay, now FSH over here in females, it will stimulate the follicles to develop. Okay, okay. Later on, all follicles undergo apoptosis, except one, and that one it is called as the primordial follicle. So FSH का काम यहाँ पे क्या है? It will stimulate the follicles and the follicles will start developing. All the follicles will undergo apoptosis except the one which will remain, that is called as the primordial follicle. And LH, again an important question over here, guys. LH, what will LH do? LH will resume the meiosis 1. The meiosis 1 is resumed, and remember that this meiosis 1, it is hormone dependent. In females, the meiosis 1, which is happening over here in the oogenesis, it is hormone dependent. अब LH के लेवल्स अचानक से बढ़ जाते हैं जिससे meiosis 1 gets resumed. अभी तक क्या था, इंट्रायूट्राइन लाइफ पूरे चाइल्डहुड में जब तक प्यूबर्टी नहीं आई है, ठीक है, इन फीमेल्स जब तक प्यूबर्टी नहीं आई है, तो meiosis 1 is arrested in the dictate stage. I mean, in the diplotin stage, and that stage is called as the dictate stage. Now, meiosis 1 to resume, it needs LH, and this LH will only become functionally active at puberty. Okay, so this will functionally become active at puberty only. So, I hope till now this is clear, everyone. Just give me a thumbs up. Till now it is clear. So, yes. Okay, Rohit, Aditya, Angel Matthews, Ritika, Jishita, Tanupriya, Avika, very good. Very good, guys. Dimple, Muskan, okay. Somaya, Veer, Sai, Jinal, very good. So remember, guys, that sudden increase, sudden increase in the levels of LH hormone, okay, from anterior pituitary what will happen? Sudden increase basically means the LH surge. अचानक से आ गया, पहाड़ी कहते हैं उसको, सर्च बोलेंगे, ठीक है. LH surge, it is responsible for resumption of meiosis 1. It will resumption of meiosis 1. We already know we have 46XX, that is the primary oocyte. Now this primary oocyte will, what will happen to it? The meiosis 1 completes. So meiosis 1, it is hormone dependent, and on which hormone it is dependent? Yes. Yes, Shravani, it is right. Which hormone it is dependent on? LH. So this is also a question that has been asked in the exam. And whenever meiosis 1 happens, guys, remember that there is formation of, it is 23X, and it is also
23x. This is called as the secondary oocyte. Secondary oocyte. Okay. Now this is called as the first polar body. It is called as the first polar body. Okay. This polar body basically contains minimum cytoplasm, and haploid number of chromosomes. Haploid का मतलब पता ही है ना, it is 23. Haploid number of chromosomes. So this polar body contains haploid number of chromosomes, and just to get rid of the extra number of chromosomes, this polar body is formed. So we have the secondary oocyte. तो प्राइमरी oocyte से secondary oocyte का बनना, okay, from primary oocyte secondary oocyte, okay, or I can simply say the release of secondary oocyte from primary oocyte, it is called as ovulation. It is called as ovulation. It is called as ovulation. तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, फर्स्ट पोलर बॉडी, ओके, इज रिलीज्ड एट टाइम ऑफ, first polar body, it is released at time of Kapil, very good, it is ovulation. So primary oocyte से secondary oocyte का बनना, or it's just the release of the secondary oocyte from, it is called ovulation. और first polar body क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, this question has been come in the exam. ये सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं. Okay, all the questions I will be discussing, so kindly don't worry. So yes, ovulation वाला पार्ट हो गया, ठीक है. Now again the secondary oocyte will undergo meiosis 2. meiosis 1 तो क्या था, रिडक्शनल था, तो इसलिए क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ. अब meiosis 2 क्या है, इक्वेशनल है, क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम. बट अगेन दिस meiosis 2 गेट्स arrested in metaphase 1. It gets arrested in the metaphase, okay, sorry, हाँ, metaphase 2, yeah. Now, can anyone tell me when the meiosis 2 will complete? At what time the meiosis 2 will complete? यहाँ पे दो अरेस्ट है, एक तो पहले ही हो गया था आईयूएल में, ठीक है. हाँ, मेटाफेज अरेस्ट बोलते हैं. तो अब ये कब कंप्लीट होगा, व्हेन विल द meiosis 2 get complete? नहीं, प्यूबर्टी भी नहीं होगा बेटा, स्पर्म वाला पॉइंट ठीक है. अब इसमें ध्यान रखिएगा, meiosis 2 completes only when fertilization takes place. Fertilization takes place. Yes, yeah, everyone is right. Only when the fertilization will take place, then only the meiosis 2 will be completed. And if the meiosis 2 gets completes after fertilization, it will form ova or female pronucleus, and it will result in the formation of the second polar body. Now, second polar body, it is formed at which stage, guys? Now, there is one more question. Second polar body कब बनेगी? चलो, first polar body तो बन रही है at the stage of it is released at the time of ovulation. What about the second polar body? When it will be released, guys? Yeah, second polar body, when it will be released? Yes, after fertilization or at the time of fertilization. Yes, after fertilization. तो अब ये जो छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं इनको फटाफट से देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए.
So first polar body is released at time of ovulation. Second polar body, it is released at time of fertilization. Size of ova. Can anyone tell me what is the size of the ova? Yes, everyone is right. Ovulation, fertilization. Comments are like, yeah, very good, guys. What is the size of the ova? Anyone? What is the size of the ova? No one. Okay. Remember, it is 120 microns, guys. It is 120 microns. It is the largest cell of the body in female. It is the largest cell. Okay. Fertilizable span of the ova. Yeah, 120 mm. Yeah. Okay. Microns. Okay. Pavan Yadav. Okay. Yeah. Fertilizable span of the ova. Yes. It is approximately around 12 to 24 hours. It is around 12 to 24 hours, guys. Be aware with the numbers. Okay. Time between the LH surge and ovulation. Okay. Time between the LH surge and ovulation, guys. Remember, it is 32 to 36 hours or 24 to 36 hours. Again, this is the best answer. ठीक है. ओव्यूलेशन और एलएच सर्च के बीच में टाइम क्या होता है? ठीक है. ऑब्वियसली बात है, एलएच सर्च होगा, उसके बाद ही क्या कहते हैं, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, उसी को ओव्यूलेशन कहते हैं. तो इन दोनों के बीच में टाइम कितना है? दैट इज अराउंड 32 to 36 आवर्स गाइस, राइट. अगेन द बेस्ट आंसर इज 32 to 36 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन, राइट. हाँ, LH search होता है basically 36 hours before ovulation, right? Apart from that, maximum number of follicles they are seen at, guys. Remember, it is fifth month of intrauterine life. Intrauterine life बोलते हैं, ठीक है, fifth month of intrauterine life, or we can say 20 weeks of intrauterine life, or it is approximately आपको देखने को मिलेंगे 6 to 7 million follicles. We have 6 to 7 million follicles. Okay, 6 to 7 million follicles. So remember, guys, ये कुछ डाटा है, just you have to cramp it. I mean, उसको रट्टा लगा लो. So remember, guys, at time of puberty, sorry, पहले birth ले लेते हैं. At time of birth, देखो जब फिफ्थ मंथ होता है ना इंट्रायूट्राइन लाइफ में, ठीक है, तब 6 to 7 million फॉलिकल्स होते हैं. जब बच्चा पैदा हो जाता है, the female is born. So at time of birth, there are only 1 to 2 million follicles which are left in the ovary. ठीक है. At time of puberty, remember, it is around 4 to 5 lakhs. Just use eraser. Overwrite हो गया. 4 to 5 lakhs. It is 4 to 5 lakhs, right, of follicles. Out of these 4 to 5 lakhs, okay, out of which 500 follicles will mature in the entire lifetime of the female. In the entire lifetime of female. याद रखिएगा that 1000 follicles undergo atresia every month. Thousand follicles undergo atresia every month.
So इसी वजह से 500 follicles are only ones which will mature in the entire lifetime of a female, and that is all the important questions. So बेटा इस पे डॉलर लगा लो फटाफट से, एक इस स्लाइड पे डॉलर लगा लेना, इट्स important, right? So I hope this is clear to each one of you guys. So just give me a thumbs up that everything is clear to, yes. Yes. Soumya, fun mode, Angel, Rutika. Okay, Avika, Dimple, very good. Very good, guys. Perfect. Perfect, guys. Sure. थक तो नहीं गए तुम लोग? Shall I continue, guys? अभी भी बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए. थक तो नहीं गए हो? वीर दोषी या के बाकी लोग कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? कंटिन्यू कंटिन्यू. ओके गाइस, आई विल कंटिन्यू. वैसे ही मैं कंटिन्यू करने वाला था. मैं तो तुम लोग की राय जानना चाह रहा था, तुम लोग के मन में क्या चल रहा है. एज योर विश. मेरी विश तो पता नहीं क्या क्या करने की है. सब करा दूंगा मैं अभी. पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं. आई कंटिन्यू, आई कंटिन्यू. ये इंपॉर्टेंस उनसे पूछना जिनका कुछ मार्क्स से रह जाता है एग्जाम में ना. तो वेट 5-10 मिनट्स की इंपॉर्टेंस वो बताएंगे बेटर. So remember guys, we have the germ cells. These germ cells basically they reach the yolk sac by 2 weeks, especially in case of females I'm talking about, right? Females. Now these yolk from the yolk sac they will reach the genital ridge. ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको. तो genital ridge देखो बाई पोटेंशियल होता है ना. Genital ridge it will reach by 6 weeks, right? They will reach the genital ridge by 5 or 6 weeks. Then oogonia are formed 5 or 6 weeks. It can vary, right? Oogonia are formed, and remember the oogonia which are formed, they are around 9 weeks. The primary oocyte, it is formed around 12 weeks, and the follicle formation, it is, remember it begins at 14 weeks, okay, and it completes by, I can say roughly by approximately 20 to 24 weeks. So this is an important slide as well. So yes. So I hope till now everything is clear, guys. I hope till now everything is clear. Genital ridge will just talk about, बेटा अभी जब मैं मीजोडर्म वगैरह पढ़ाऊंगा ना तब मैं बताऊंगा बिल्कुल. तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं. अभी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक पूरा जो हम लोग पूरा डेवलपमेंट पढ़ेंगे. तो अभी सिर्फ आपको oogenesis और spermatogenesis, ये जेनाइटल रिज, योक सैक, एमनियन, कोरियन क्या होता है सब बिल्कुल डायग्राम बना बना के सीखेंगे. सो यस. यस.
Very good. Before that, let's just answer one or two questions. Now, answer this question, guys, fast because I think you're getting bored. So let's polish up what we have discussed. Maximum oogonia can be seen in the ovaries at. This was one of the PYQs, past year question that has been asked. Yes. Tanupriya, yes, it is A, couple A. Yes, it is fifth month of intrauterine life. And can you tell me what is the number that are like around the fifth month? Yes, it is 6 to 7 million follicles, right? Yes, yes, very good, very good. Now, next question. Zona hatching wala to nahi hai. Okay. First meiotic division of oogenesis gets arrested at. Yeah, 6 to 7 million था. हाँ बिल्कुल ठीक है Dimple. Fun mode, everyone is right. First meiotic division of oogenesis gets arrested at. Yes, it is the diplotein stage of the prophase और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं dictate stage. इसी को क्या बोला जाता है dictate stage. Answer is 2. Yes, it is the dictate stage. Right. The third question. Now, this is an important question. In which of the following the transition meiosis occurred? In which of the following the transition meiosis occurs? Transition means change. Lima Soni saying B, Avika B, B. No, no. That's what I wanted to test you guys right now. Yes. D, नहीं बेटा. स्पर्मेटोगोनियम टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इसमें मियोसिस ही नहीं होती है. इसमें क्या होता है स्पर्मेटोगोनियम टू प्राइमरी oocyte, इसमें तो माइटोसिस हो रही है ना. क्वेश्चन में तो मियोसिस लिखा हुआ है, वो तो कहीं से कहीं तक नहीं है आंसर. जर्म सेल्स टू स्पर्मेटोगोनियम, नहीं बेटा इसमें तो कुछ है ही नहीं माइटोसिस. Yes, A, fun mode. Yes, A will be the answer, guys. Yes, that was a tricky question. Yes, A will be the answer. तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए. ओके, इसमें हो रहा है सेकेंडरी मियोसिस और इसमें हो रहा है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. प्राइमरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन. तो पहली वाली जो है गाइस, इट इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. तो चेंज तो फर्स्ट वाली में आ रहा है ना. प्राइमरी में 46 थे, सेकेंडरी में कितने रह गए 23. सो रिमेंबर गाइस, चेंज का मतलब ही यहाँ पे क्या है कि यू गाइस हैव टू बी वेरी श्योर कि क्वेश्चन में सबसे बेस्ट आंसर क्या है. जब सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम नंबर इज ऑलमोस्ट सेम, तो कोई चेंज ही नहीं है. तो ट्रांजिशन का मतलब क्या है चेंज ना. तो चेंज तो पहले वाले में होगा. जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था तो उसमें 46 थे, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 23. दैट विल बी 23. So I hope this is clear to everyone. I hope this is clear to everyone. Yes, 2N to N. Very good. Fun mode. This is, yeah. Okay. So blastos stages in the development of follicle. Stages in the development of the follicle. I hope we shall continue like tomorrow now. I hope you all enjoyed the lecture. I will continue it tomorrow, guys, at the same time in the morning. Yes. I hope you all enjoyed the session. Please leave back your feedbacks in the comment section out there. Yeah, please leave back your um, feedbacks. Any doubts, Peter? Any doubts? Yes. So yeah, any doubts you can text me on my number. Only WhatsApp, guys. Okay. Or you can also like reply to my mail, that is
Abhijit Kumar Sharma. And if you have any doubts, guys, you are free to ask. Okay, 24/7. Just leave your doubts on my mail or my WhatsApp. I will be happier to address you guys. Right? So, yes, please leave your comments, your feedbacks in the comment section down. I will be happier to meet you again tomorrow at the same time, 10:30. And I hope everyone is preparing the notes. Everyone is writing along with me. Right? Okay. So, yes. Sure. Take it. So, thank you guys very much. Okay. Let's end the session now. Okay. Goodbye. Goodbye.